So, good morning, everyone. Today's class is about graphical analysis of the four bar linkages. So, in this class, we will learn how to draw the acceleration polygon and to determine the acceleration for a simple four bar mechanism. As you know, four bar mechanism actually represents all the engines, compressor, pump. They all can be represented by simple four bar mechanism. So let's say we have this four bar mechanism. And let's say this point is O1 and this point is O3. This is B and this is C. Let's say this is making 45 degree and it is moving in counterclockwise direction, and it also has angular acceleration in the same direction, which means that the speed is increasing in counterclockwise direction. Let's say we know the length 1 inch is here, length BC is 3.5 inches. Let's say this is 2 inches. So all other angles we can determine using the position analysis. So after determining, let's say we found that this is 150 degree, this one is 45 degree, and this one is 120 degree. So velocity of point B is given as 30 inch per second. Okay. Also, the value of alpha 1 is given as 200 radian per second square. It is desired to determine the acceleration of point C, of point B, and link BC. Okay. So very first thing, we need to draw the velocity polygon. So for drawing the velocity polygon, I will take one fixed point O, and because we know the velocity of point B and direction also, so we can draw, in order to find point B, which will be perpendicular to link O1B, and the length will be representative to 30 inch per second. Okay. Now with respect to B, the velocity of C will be perpendicular to link BC. So I will just draw a perpendicular line to link BC. And similarly, with respect to O, the velocity of point C can be determined by drawing the line perpendicular to link O3C. So I will just draw a line so that it is perpendicular to link O3C in order to get the point C.
So if we measure the length OC, we will get the velocity of point C. Or if we measure the length BC, we can get the velocity of point C with respect to B and vice versa. So let's say we have measured it and we found that length BC is representing 10.1 inch per second and OC is 21.6 inch per second. So this kind of problem you have already solved in during the velocity analysis. So I'm not going much into the detail of this. Now let's try to draw the acceleration polygon. So for determining the acceleration, again we will select one fixed point and we will use dash sign O dash. You can take the help of the table. Once you become pro, you do not need the help of this table. But if you are not experienced enough, it is always advisable to make this table so that you remain very clear what component, what acceleration components can be there. So here vector points or acceleration points, you can say whatever you want. Then here components, then magnitude, and then direction. So let's start from point B. Acceleration of point B will have two components, that is the normal component and tangential component. Similarly, for point C, it will again have two components, that is the normal component and tangential component. Similarly, the acceleration of point C with respect to B will also have two components, the normal component and tangential component. So normal component, if you remember, normal component is always opposite to radius vector. So it will be something like this, and magnitude is omega cross r, है ना? Normal component is omega cross r and tangential component is alpha cross r. इसको v square by r भी लिख सकते हैं. So here we know the vb is given 30. So v square by r will become 900 divided by 1 inch. Okay, so that will be the magnitude. Direction is parallel to O1b and towards B. Sorry, towards O. Towards O1. Tangential component क्या हो जाएगा? So tangential component
will be perpendicular to O1b, you know, and in the direction of alpha. So it will be like this. इसकी वैल्यू हो जाएगी alpha cross r. Alpha is given as 200. So 200 into 1. Okay. And this one is perpendicular to link O1b in the direction of alpha. So we know magnitude and direction of both the components for point B. For point C, normal component is opposite to radius vector. तो ये towards O3 हो जाएगा and will be parallel to O3C. Okay. नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर. तो वी जो है वो है 21.6 है ना. वी जस्ट डिटरमिन ओ सी. सो वेलोसिटी ऑफ सी इज 21.6. तो ये हो जाएगा 21.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. आर की लेंथ दी हुई है 2 इंचेस. सो आई एम जस्ट राइटिंग 2. So how much this will become 233 inch per second square. Okay. And direction is parallel to O3C and towards O3. Tangential component क्या हो जाएगा? It will be alpha cross R. Alpha for link O3C is unknown, so I will just write it is unknown. Direction will always be perpendicular to O3C, but we really don't know it is upwards or downwards, means it is in clockwise direction or anti-clockwise, but it will always be perpendicular to link O3C. Now for the normal component, the value will be V square by R. V जो है वो है 10.1. तो ये हो जाएगा 10.1 का स्क्वायर by R. R is 3.5. Okay. So this will become 29 inch per second square. What will be the direction? The direction will be parallel to link BC and towards B. Okay. Tangential component is alpha cross R. Alpha we don't know for BC, so I'm just keeping it blank. But the direction is always perpendicular to BC. I'm just here trying to draw a virtual direction. So this one is perpendicular to link O3C, but it is trial vector, so double arrows. This one is known and this is again unknown, so trial vector. So let's start drawing the acceleration polygon. Always start with the normal component. So from O dash, let's start it from point B. तो B के लिए हमें नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता है और ये हम लोगों ने एकदम पैरेलल टू BO1 खींच दिया such that this will represent the normal component जिसकी की वैल्यू है 900 inch per second square.
Okay, then यहाँ से टेंजेंशियल खींच सकते हैं और टेंजेंशियल का भी हमें डायरेक्शन पता है. ओके, सो टेंजेंशियल विल बी समथिंग लाइक दिस. इसकी वैल्यू भी पता है और डायरेक्शन भी पता है. वैल्यू है 200 और डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू लिंक O1B. तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट इसको बोलेंगे. Inch per second square. So this point you will get, this point will be B dash. और अगर इस पॉइंट को आप O dash से मिला देंगे तो the length of this point will represent the acceleration, total acceleration of point B if you measure the length O dash B dash. तो B dash के लिए आप acceleration सिर्फ इतने से पा सकते हैं. Next, because we want to determine the acceleration for point C and link CB, so we must proceed towards point C. So again, from the B itself, we can draw the normal component of BC. तो normal component जो होगा, that will be perpendicular to link BC and towards B, correct? So you can just like this. So this is the normal component and I'm just writing ANCB और इसकी वैल्यू हमें पता है. इसकी वैल्यू है 29. ओके, डायरेक्शन भी पता है. इट इज पैरेलल टू BC एंड टुवर्ड्स B. तो इसलिए मैंने पैरेलल टू BC ड्रॉ करने की कोशिश की है. And from here the tangential component is required to be drawn. The tangential component will be perpendicular to link BC. तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल सकते हैं. ये आप ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं. मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए ऊपर लिया है. एंड इट्स ए ट्रायल वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है. सो वी डोंट नो वेयर इट विल, where will be the C dash point. So this will be tangential component. So in order to find out the point C dash, let's again consider point O dash. So from O dash, we can draw the normal component for point C, that is parallel to O3C. तो यहाँ से O3C के पैरेलल में एक लाइन ले लिया जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और ये है 233, करेक्ट. तो यहाँ से हमने ANC जिसका मैग्नीट्यूड है 233 इंच पर सेकेंड स्क्वायर, इसका डायरेक्शन भी पता है. डायरेक्शन क्या है? पैरेलल टू O3C, ठीक. और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ले लेना है. तो यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेंगे लिंक O3C के. तो हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाएगा एंड द पॉइंट वेयर इट विल इंटरसेक्ट will be point C dash. So if you will measure the distance from this point to C dash, you will get the tangential component.
and if you just match the point O dash to C dash, you can get the acceleration of point C, the total acceleration of point C. Now, if you measure, uh, if you want to determine the acceleration of point C with respect to B, then you should match B dash and C dash. तो B dash और C dash का जो मेजरमेंट होगा वो होगा टोटल एक्सेलरेशन ऑफ लिंक CB. O dash C dash को मिला देंगे तो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C. So you can measure various things here. Let's say this, we found that it is 930 inch per second square, and AC is, let's say we found it 1134 inch per second square. Similarly, the tangential component we found is 1110 inch per second square. So we can determine alpha 3 क्या हो जाएगा, tangential acceleration of point C divided by O3C. तो ये हो जाएगा 1110 divided by 2 inches, so 555 radian per second square. अल्फा 2 क्या हो जाएगा, अल्फा 2 हो जाएगा tangential component ACB. So ACB is 930. Okay, so 930 divided by length is 3.5, so it will become 266 radian per second square. So alpha 2 is nothing but alpha CB. Okay. So in this way you can determine the angular acceleration of link 3 or link 2. Okay, how to determine the direction of various angular accelerations? तो देखिए लिंक BC जो है वो कुछ ऐसे है ना? On the image itself, BC is like this. ATCB का डायरेक्शन क्या है, देखिए ऐसे है, करेक्ट. इन द एक्सीलरेशन पॉलीगन द ATCB इज लाइक दिस. तो इस वेक्टर को देखिए, जो टेंजेंशियल वेक्टर होता है वो डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, क्योंकि टेंजेंशियल वेक्टर क्या है, इज अल्फा क्रॉस आर. तो हमें अल्फा की डायरेक्शन निकालनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है, इसलिए टेंजेंशियल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ अल्फा. सो let's say we want to determine what is the direction of angular acceleration of link BC. तो BC को ले लिया और C पॉइंट पे हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर रख दिया ATCB. So now we know that this is the direction of alpha 2. सिमिलरली O3C अगर देखना है आपको तो आप कैसे देख सकते हैं, O3C इस तरह है कुछ, O3C और C का टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर है, देखिए ATC इज लाइक दिस हियर, है ना, ऑन द एक्सेलरेशन पॉलीगन. तो
इसका डायरेक्शन ये इधर ही आएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि अल्फा 3 का जो डायरेक्शन है वो इधर है। सो अल्फा 3 इज काउंटर क्लॉकवाइज, अल्फा 2 इज ऑल्सो काउंटर क्लॉकवाइज, अल्फा 1 is also counterclockwise, which is given at this particular moment. Okay. So I hope that this acceleration polygon has now become clear to you and you can solve some complex problems. So some of the complex problems have been given to you in assignment and you can start solving those problems. So is there any question? So if not, I will just go to next topic, which is Coriolis acceleration. So I will suggest you to start drawing acceleration polygon first by making the table in the side. But once you become pro, you should also try to make acceleration polygon as quickly as possible because you won't have much time in your exams. So you should learn how to make acceleration polygon quickly. So in order to make it quickly, you should not focus much on table, but you should be pro in doing rough calculation and just start drawing acceleration polygon by drawing the normal component and tangential component. Yeah. Okay, one by one. And solving for acceleration also require that you are proficient with velocity polygon also. So you know the time taken by a problem of acceleration polygon will be almost thrice of the time taken by the velocity analysis which you did in till your midsem, till the last quiz. So again you won't have much time in your exam for solving acceleration related problems, you know. So I will hardly give you 10 to 15 minutes for one acceleration problem. So I will suggest you that you practice it as much as possible in order to become proficient and solving it quickly. So Coriolis acceleration relates to graphical analysis for sliding contact linkages. Okay. So let's say that we have a link and this link is movable and on this link there is a component which can slide.
Okay, this is, you can say this one is slider, which can slide as this link rotates. So dual action is taking place. One is by link 2, which is a slider, and it slides on link 1. Okay. Whereas the link 1 rotates. At any particular point, let's say B is the point, then B2 is for link 2 and B1 is for link 1, because this point is common to both the links. So whenever there is this rotating path and a point has a velocity relative to that path, then there exists an additional acceleration, and this additional acceleration is called Coriolis acceleration. So if you see this linkage system, the total acceleration of any point on the slider consists of one, the normal and tangential acceleration. So I'm talking about this point B. So the acceleration of point, total acceleration of this point on this slider, it consists of normal and tangential acceleration. And second is relative acceleration of slider. And third one is Coriolis acceleration. If you remember, a few days ago we had solved the moving coordinate system problem. So in the moving coordinate system problem, we got one expression which was 2 omega cross v. So this 2 omega cross v was nothing but Coriolis acceleration. For planar linkages, the direction of Coriolis acceleration is generally found by rotating this relative velocity vector 90° in the direction of rotating path. Or you can say, if I want to further explain few concepts, then let's say we have this link OA, and after certain time OA has come to this another position. Let's say this OA is rotating, and now the new position is OA dash. Okay, so it has turned to some angle such that A has come to a new point A dash. And at the same time, there was a point B which was sliding on this link OA. And it at this particular point, let's say that B was moving upside. So as the OA has come to OA dash, B has come to a new point B dash. Okay. वो ऊपर नीचे दोनों जा सकता है. I have just taken one example that is
it has been moved to a new point B dash. So from B dash, let's draw a parallel line parallel to AA dash, and let's say this point is, okay, let's say अगर B मूव नहीं कर रहा होता तो ये C पे आता, but because it is moving or it is sliding on the link OA, it has come to point B dash. Let's draw a parallel line parallel to link OA. Okay, and let's say this point is D. This point is, let's say this is F, while the angle which has been turned is d theta. So link OA has turned to an angle of d theta, while the point B has moved to a new position B dash. Then dB dash can be written as FB dash minus FD. Okay. Or FB dash minus FD is nothing but BC, you know. So and FB dash क्या है? FB dash is OF d theta, because d theta is very small. So OF d theta minus BC क्या है? BC हो जाएगा OB d theta. Okay. So here it becomes OF minus OB d theta, which is nothing but FB d theta. Which is also equal to CD d theta. Now you see CD क्या है? CD is translational velocity. Okay. So इस पूरे प्रॉब्लम को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि B जो है वो फर्स्ट C पे आया इन ए रोटेटिंग पाथ, और फिर C से D वो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से गया, और D से B डैश वो फिर से एक रोटेटिंग पाथ में आया. तो टोटल B से B डैश जाने का जो प्रोसेस है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, B to C, C to D and D to B डैश. तो CD is translational velocity. Let's say velocity is V, है ना. तो CD जो है वो V dt, okay, and where dt is the time taken by the link OA to turn to OA dash, and d theta क्या हो जाएगा? अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो ओमेगा डी टी. ओके. तो एक्चुअली डी बी डैश जो है वो सी डी इज वी डी टी,
and so I will just write CD is V dt into d theta, and d theta क्या है, V dt, and d theta is omega dt. So this actually becomes V omega dt square, है ना, dB dash is V omega dt square. Now we also know that a common expression for distance measured by any particle is half at square, है ना. dB dash भी तो एक डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस एक s के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो हाफ एटी स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, v ओमेगा डी टी स्क्वायर को. तो अगर मैं ये दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे अगर मैं t की जगह डी टी स्क्वायर कर दूं तो ये डी टी स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड आउट, and then this acceleration is 2 v omega, which is nothing but this expression. How do we can find the Coriolis component? Notice what is Coriolis component. Coriolis component जो है वो dB dash के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अगर आप इस फिगर में देखें तो दिस इज द एक्सेलरेशन when the particle or when the slider moves from d to b dash. Okay, so this is the additional Coriolis acceleration. Otherwise this one is CD क्या है, CD 0.2 है. देखिए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडर, CD इज रिलेटिव एक्सेलरेशन. BC क्या है, वो नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, BC पे आता अगर कोई भी स्लाइडिंग कंपोनेंट नहीं होता. सो इन वेक्टर फॉर्म AC इज 2 ओमेगा क्रॉस V, ऐसा लिखते हैं. अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए, let's see an example and let's further elaborate on this topic. Let's say we have a link and this link has some point into it which has a movement in the restriction, and this point can move into the slot. ठीक, जब ये लिंक रोटेट करती है तो वो इस स्लॉट के अलोंग ही मूव कर सकती है. And this slot, it exists into a plane, into another link, you can say. Now this plane or this another link can actually rotate with omega 1. And this is link 2, this is link 1. And this slot, let's say, has a radius of RP. And let's say this coincident point is B. Then
Also consider that link 1 is moving with an angular velocity of 20 radian per second. Clockwise. And the velocity of point B2 on link 2 with respect to a coincident point on link 1, or you can say V B2 B1 is also given, and it is 30 inch per second. So we need to find out the Coriolis component. Now, why the Coriolis component is here? Because uh, this point B is not only moving, is not only rotating, but it is also sliding with respect to link 1. So in this case, the Coriolis component will become AC B2 B1, and it is 2 omega 1 cross V B2 B1. So it is 2 cross 20 cross 30. So it will become 1200 inch per second square. And how to determine the direction? Let's say we know the direction of V B1 B2, V B2 B1, okay, और V B2 B1 की डायरेक्शन हमें पता है वो कुछ ऐसी है. So sorry, it will be like this. It will be tangential to this arc, है ना. तो V B2 की B2 B1 की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो जाएगी. This is V B2 B1. तो अगर आप इसको 90 डिग्री टर्न कर दे, in the direction of omega 1, then you will get the Coriolis component. So the direction of this Coriolis component is found by rotating this relative velocity vector V B2 B1 in the direction of omega 1 by 90 degree. Also, you should note that the subscript of Coriolis component and V must correspond. Okay, यानी कि यहाँ पे AC B2 B1 जो है, it always corresponds to V B2 B1. तो यहाँ पे V B2 B1 की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स, B1 B2 की डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी. okay? And it should be always taken with link 1, है ना, यानी कि ओमेगा 1 के डायरेक्शन में ही रोटेट करना है, बिकॉज दिस लिंक 1 गाइड्स द स्लाइडर, or you can say that we know the relative path of link 2 along the link 1. अगर मैं आपको बोलूं कि इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट लिंकेज भी बना सकते हैं, तो वो शायद आपको समझने में ज़्यादा आसान होगा. तो एक इक्विवेलेंट लिंकेज बनाने की कोशिश करते हैं. तो एक तो लिंक हमारी हो गई O2B, और यहाँ से OP हो गई, और
लेट्स से यहाँ कहीं O1 है और ये O1 से OP हो गई और ये हो गई हमारी फिक्स लिंक. This whole system can be made by this 4-bar diagram. What is OP? OP जो है जहाँ से इस स्लॉट का रेडियस हमने मेजर किया था वो पॉइंट है. The concept of equivalent linkage is interesting but tough, and it requires a lot of experience before you can draw the equivalent linkage system for any complex configuration of links. Let's take one more example to make the things clear. Let's say we have this linkage system. I'm just trying to solve the problems for Coriolis acceleration. So we are considering one problem where the sliding as well as rotation both are there. तो लेट्स से एक ये स्लाइडर है जो कि लिंक 1 पे स्लाइड करता है. लिंक 1 क्या है? O1 B1 जो है ये लिंक 1 है और O2 के लिए सेम पॉइंट B2 हो जाएगा जो कि लिंक 2 है. एंड let's say this slider travels along this link 1 which can also rotate. So you must remember that if there is such a condition where rotation as well as sliding both are there, then Coriolis acceleration will be involved in this analysis. So let's say that we know that link 2 is rotating with a constant angular speed of 15 radian per second, and let's say अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि अल्फा 2 जो है वो 0 हो जाएगा. ऑल अदर लेंथ्स वी नो. तो लेट्स से कि ये है हमारे पास 300 mm का, ये है 240 mm का और ये है 275 mm का. We also all the angles using the position analysis. So very first thing, let's draw the velocity polygon. Velocity polygon के लिए हमने एक फिक्स पॉइंट लिया O और B2 हम निकाल सकते हैं which will be perpendicular to O2 B2 ना. तो यहाँ से O2 B2 हमें इसकी डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है. B2 B1 हम निकाल सकते हैं. एक लाइन हम लोग जस्ट पैरेलल टू लिंक O1 B अगर खींच देंगे तो B2 B1 के लिए ये डायरेक्शन हमें मिल जाएगा. और O1 फॉर फाइंडिंग आउट द पॉइंट B1 हम लोग O1 B1 से परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा B1. So this velocity polygon can be drawn very easily in this case. So now let's try to draw the acceleration polygon. Acceleration polygon के लिए हम क्या करेंगे? O डैश ले लेते हैं. O डैश से B2 का शुरुआत करते हैं. देखिए मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अभी एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन पहले तो नॉर्मल कंपोनेंट लिया, उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स O2 होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा क्रॉस आर ना. तो हमें ये पता है, ये है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ B2. ठीक, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है इसलिए ये पॉइंट B2 डैश हो जाएगा.
ना, और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो उसकी पॉइंट B2 की टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगी। B1 के लिए क्या करेंगे? नॉर्मल कंपोनेंट B1 का क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स O1 ओमेगा हमको पता चल गया है वेलोसिटी पॉलीगन से, इसलिए ओमेगा क्रॉस आर हम लोग को पता चल जाएगा। तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, सो दैट दिस विल रिप्रेजेंट A and B1. Is it fine for everyone? Then यहाँ से हमको टेंजेंशियल कंपोनेंट चाहिए। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा? परपेंडिकुलर टू लिंक O1 B1। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर हम लोग खींचते O1 B1 के परपेंडिकुलर, तो लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस। इट्स ए ट्रायल वेक्टर, अपसाइड भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। Now this intersection point will not denote the B2 dash, sorry B1 dash, because here the Coriolis acceleration is involved. Coriolis acceleration के लिए हम क्या कर सकते हैं? Coriolis acceleration जो है AC B2 B1, इसकी वैल्यू होती है क्या? 2 ओमेगा इंटू V, है ना। ओमेगा हमें पता है और V भी पता है, करेक्ट। इट मीन्स V इज व्हाट? V B2 B1 और ओमेगा इज ओमेगा 1, है ना। वो वेलोसिटी ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पॉलीगन से निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता हो गई है और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन हो जाएगा something like this. AC B2 B1, और ये डायरेक्शन कहाँ से आ गया? ये डायरेक्शन आ गया if you remember what we did in the previous problem, we have rotated the relative velocity vector 90 degree in the direction of guiding vector. ओके तो अगर आप देखिए यहाँ पे ये है B2 B1, ओके, और वो B1 की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब है कि O1 B1 वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और व्हेन इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमने क्या किया? रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दिया। ये देखिए, ये रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है B2 B1। इसको अगर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर देंगे तो वो ऐसे आ जाएगा, करेक्ट। तो हमने वही किया है। B2 यहाँ पर देखिए, B2 डैश यहाँ पे B2 डैश है, और इसी की डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे ले लिया है सच दैट इट एंड्स एट B2 डैश। तो हमने ये कोरियोलिस कंपोनेंट ले लिया और हमें ये पॉइंट पता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है। So now we know this point, but remember this is not the only point. ये
हमने कवर किया कोरियोलिस कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट बचा हुआ है ना। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको याद होगा, कोरियोलिस जब भी होता है तो इसका मतलब है कि तीन चीजें एक्स्ट्रा हो रही हैं। इफ यू रिमेंबर, ये एक स्लाइडर है इस पे, और रोटेशन के बाद ये स्लाइडर यहाँ पहुंच गया। तो क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा हुई? एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और तीसरा ये हुआ। तो इसके लिए तो हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन कर लेते, और इसके लिए कोरियोलिस कंपोनेंट, दिस वन इज फॉर कोरियोलिस कंपोनेंट। ये जो बच गया ये होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट, और इसको हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट को निकालने के लिए क्या करते हैं? We will draw a line perpendicular to this link, and this link will be AT B2 B1. So that is how we can find the another point B1 dash. I think some more discussion is required on Coriolis part because it is not easy for you. So again, we will solve one more problem in the next class related to Coriolis component so that it can be made more clear. So does anyone has any question?